ইংৰাজী ভাষা কলেই লাজ পাব লাগিব সেই দিন এতিয়া আৰু বেছি দূৰ নহয়। हम सब के जीवन में इस देश में अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी, ऐसा समाज का निर्माण अब दूर नहीं। आमार भाषा आमार संस्कृतिर अलंकार। आंचलिक भाषार विकास हलेहे देशर सम्पूर्ण विकास हब। भाषा विवादर মাজতে गृहमंत्री अमित शाहर गुरुत्वपूर्ण मंतव्य। दिल्लीर एक अनुष्ठानत आंचलिक भाषाक লৈ गुरुत्वपूर्ण मंतव्य देशर गृहमंत्री अमित शाहर। অতি শীঘ্ৰেই আমি এনে ধৰণে এখন সমাজ গঢ়িম যিখন সমাজে ইংৰাজী ভাষা ক'বলৈ লাজ পাব। আমাৰ ভাষা আমাৰ সংস্কৃতিৰ অলংকাৰ। ভাৰতৰ ভাষাসমূহৰ বিকাশ হলেহে দেশৰ সম্পূৰ্ণ বিকাশ হ'ব। আধৰুৱা বিদেশী ভাষাৰে সম্পূৰ্ণ ভাৰতক বুজিব নোৱাৰি। আমাৰ দেশৰ ভাষাসমূহ নহলে আমিও ভাৰতীয় হৈ নাথাকিম। বিদেশী ভাষাৰে ইতিহাস সংস্কৃতি আৰু ধৰ্ম বুজিব নোৱাৰি। हमारा देश, इसका इतिहास, इसकी संस्कृति, ये हमारा धर्म, इसको समझना है तो कोई विदेशी भाषा में नहीं समझा सकती। লগতে অমিত শাহে কলে ইংৰাজী ভাষাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতাৰ বাবেই বহু প্ৰতিভাই সুযোগ পোৱা নাই, যাৰ বাবে নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতিত মাতৃভাষাক প্ৰাধান্যতা দিয়া হৈছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিজৰ ভাষাতেই শিক্ষা লাভৰ সুবিধা পাইছে। দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত ভাষাক লৈ বিতৰ্ক চলি থকাৰ মাজতেই অমিত শাহৰ এই মন্তব্যই বহন কৰিছে বিশেষ তাৎপৰ্য। गोविंद मोहन जी ने हिंदी के प्रति चिंता व्यक्त की, हिंदी की पूरी यात्रा का बहुत अच्छे से वर्णन किया, अभ्यासपूर्ण वर्णन किया, मगर मैं थोड़ा उनसे असहमत हूं। कोई संकट नहीं है, मेरी बात याद रखना, हम सबके जीवन में, मेरी बात ध्यान से सुनना, हम सबके जीवन में इस देश में अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी, ऐसा समाज का निर्माण अब दूर नहीं। न्यूज़ 6 रिपोर्ट, प्राग न्यूज़ डिजिटल।